इस लेक्चर में हम आपके साथ एक्सरसाइज 1.2 शेयर करने जा रहे हैं। चैप्टर का नाम है रिलेशंस, क्लास 12 का चैप्टर है, पहला चैप्टर एक्सरसाइज 1.2। ये वाली एक्सरसाइज काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें 1 फंक्शंस, 1-2 फंक्शंस, मैनी फंक्शंस, 1-2 फंक्शंस, बाइजेक्टिव सर्जेक्टिव इसके बारे में पढ़ेंगे। मेनली एक्सरसाइज मेरी ये जो लेक्चर है ये एनसीईआरटी क्वेश्चंस पर है। कंसेप्ट के वीडियोस अगर आपको देखने हैं रिकॉर्डेड लेक्चर्स तो आप वेबसाइट पे जा सकते हैं, वहाँ से आप परचेज कर सकते हैं। चलिए हम शुरू कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.2 अकॉर्डिंग टू द एनसीईआरटी सिलेबस। थोड़ा सा इसमें मैं ग्लिम्स बताऊंगी कि क्या होता है 1 on 2. ट्राई टू रिलेट यू to what is that. Okay, so I'm going to share my screen along with you. ये हमारा क्वेश्चन है, यहाँ पे आप देखिए टाइप्स ऑफ फंक्शंस। आज ये जो सेकेंड एक्सरसाइज है टाइप्स ऑफ फंक्शंस पे डिपेंड करती है। तो हमारे कई तरह के फंक्शंस होते हैं, आप जैसे यहाँ के देख रहे हैं कि हमारा देखिए एक फंक्शन होता है 1 जिसको इंजेक्टिव कहा जाता है, दूसरा फंक्शन होता है ऑन टू, इसको सर्जेक्टिव कहा जाता है। अगर कोई भी फंक्शन 1 और ऑन टू दोनों होता है तो उस फंक्शन को हम बाइजेक्टिव फंक्शन कहते हैं। अगर कोई ऐसा फंक्शन है जो कि 1 और ऑन टू दोनों होता है वो फंक्शन, तो उसे हम बाइजेक्टिव कहते हैं। ये जो वर्ड होता है, 3 वर्ड इंजेक्टिव, सर्जेक्टिव, बाइजेक्टिव, इसको आप बहुत ध्यान से समझ लीजिए कि फंक्शंस आपके मेन 3 तरह के हो गए, 1 ऑन टू। तो 1 को हम इंजेक्टिव कहते हैं, ऑन टू को सर्जेक्टिव कहते हैं, और जो फंक्शन 1 और ऑन टू दोनों होता है उसे हम बाइजेक्टिव फंक्शन कहते हैं। अब हम समझाने जा रहे हैं 1 फंक्शन क्या है या ऑन टू फंक्शन क्या है। तो आप देखिए ये 4 फिगर्स हैं आपके सामने एनसीईआरटी बुक में, हम इसी से आपको समझाएंगे। तो यहाँ पर आपके पास ये 2 सेट्स हैं, x1 और x2, अलग अलग पिक्चर्स आपके लिए बनी है। तो अगर आप यहाँ पर देखिए हर एलिमेंट 1, इसके लिए यहाँ पर हर एलिमेंट आपका एक सेपरेट एलिमेंट है। इस फर्स्ट एलिमेंट के लिए एक सेपरेट एलिमेंट है, 2 से b का, 3 से d से। यदि अगर हम ऑर्डर्ड पेयर बनाते हैं तो 1, a, फिर 2, b, देन 3, d, देन 4, c। हर एक आगे वाले के लिए पीछे वाली एक इमेज सेपरेट इमेज है, तो ये आपका 1 कहलाएगा। ये फंक्शन आपका कहलाएगा 1 फंक्शन, यानी एक इंजेक्टिव फंक्शन। इसी तरीके से आप यहाँ देखिए, यहाँ पर ये जो 1 और 2 है इसके लिए सेम इमेज आ गई, तो ये आपका 1 फंक्शन नहीं है। ठीक है, यहाँ पर भी आप देखिए 1 और 2 दोनों के लिए ये सेम इमेज आ जा रहा है, ये भी 1 फंक्शन नहीं है। आप यहाँ पर कंसिडर करिए, देखिए 1 के साथ b है, फिर आपका 2 के साथ c है, फिर आपका 3 के साथ a है, 4 के साथ d है, तो ये आपका 1 फंक्शन है। तो जहाँ पर एक सेपरेट एंटिटी होती है उसे हम 1 फंक्शन कहते हैं, या हम उसे इंजेक्टिव फंक्शन कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? इंजेक्टिव फंक्शन कहते हैं। अब चलिए हम समझते हैं कि सर्जेक्टिव फंक्शन क्या होता है। सर्जेक्टिव फंक्शंस वो होते हैं कि जिसमें हर इमेज के लिए एक प्री एग्जिस्टिंग होता है, और हमारे पास, अगर मैं सीधी भाषा में कहूँ कि अगर मेरे पास ये 2 सेट हैं, तो आप इस वाले सेट में देखिए कि यहाँ पर हर एक एलिमेंट के लिए यहाँ पर एक इमेज है। इसी तरह इस वाले सेट में हर एक एलिमेंट के लिए यहाँ पर इमेज है, लेकिन इस वाले सेट में यहाँ पर भी मेरे एलिमेंट्स 2 बच गए, इनके लिए यहाँ पर कोई इमेज नहीं है। यहाँ पर भी 2 एलिमेंट्स बच गए, इनके लिए यहाँ पर कोई इमेज नहीं है। तो हमारे जो ऑन टू फंक्शंस हैं वो मेरे केवल ये और ये हैं। ठीक है, इन्हें हम सर्जेक्टिव फंक्शंस कहते हैं। ऑन टू को क्या कहते हैं? सर्जेक्टिव। अच्छा, एक आपका वर्ड और आता है मैनी वन। मैनी वन आपका कौन सा है? मैनी वन आपका जैसे ये वाला है, 1 के लिए b की भी इमेज है, 2 के लिए b की इमेज है, मतलब सेम आपके लिए आ रहा है, 1 का b से भी है, 2 का b से भी है। तो ये वाला जो फंक्शन है ये आपका मैनी वन फंक्शन होता है। तो अभी अब हम क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। तो अभी हमने आपको बता दिया 1 फंक्शन, ऑन टू फंक्शन। तो जो ऐसा फंक्शन हो जो 1 भी हो और ऑन टू भी हो, जैसे आपका ये वाला फंक्शन है 4th वाला, ये 1 भी है और ऑन टू भी है, दोनों सेटिस्फाई करता है, तो ये आपका बाइजेक्टिव हो जाएगा। ऐसा फंक्शन जो 1 और ऑन टू दोनों सेटिस्फाई करेगा उसे हम बाइजेक्टिव फंक्शन कहते हैं। अगर आपको कंफ्यूजन होगा तो वीडियो को रिवाइंड करके सुनिएगा, आपको समझ में आएगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं एक्सरसाइज 1.2। क्वेश्चन देखते हैं।
थ्योरेटिकल क्वेश्चन होते हैं, बिल्कुल भी समझ में नहीं आता, थ्योरेटिकल तरीके से हमें आंसर लिखना पड़ता है, लेकिन हम इसको शो करते हैं कि हम इसको किस तरीके से करेंगे। करने के पहले मैं आपको एक आध एग्जाम्पल भी दिखा दूँ, जब मैं करूँगी तो आपको थोड़ा ऑकवर्ड नहीं लगेगा कि मैडम ये क्या लिख रही हैं, बताया क्या था और लिख क्या रही हैं। जैसे मान लीजिए आपको ये वाला क्वेश्चन है, मान लीजिए यही सामने है कि आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है f(x) = 2x, तो हमें इसको शो करना है कि 1 है कि ऑन2 है या ये फंक्शन दोनों है, ठीक है। तो आपने ये f(x) लिया, तो f(x) में क्या होता है कि हम ये प्रूव करते हैं कि f(x1) और f(x2) बराबर है, मतलब इफ f(x1) = f(x2) देन x1 = x2 अगर आ जाता है तो ये फंक्शन मेरा 1 हो जाता है। ये इसका फंडा है थ्योरेटिकल भी। यहाँ पर देखिए f(x1) f(x2), तो यहाँ पे 2x1 2x2 हो गया। अब ये 2 और 2 मेरा कैंसिल हो गया, तो x1 = x2 आ गया, तो दैट वाइज दिस फंक्शन इज 1, दिस फंक्शन इज 1। ऑन2 पता करने के लिए हम उसके लिए इनवर्स फाइंड करते हैं। दैट मीन्स आप यहाँ पर देखिए कि हम यहाँ लिखेंगे f(x) को y लिख देंगे और ये 2x हो जाएगा, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा y/2, ठीक है, y/2। तो यहाँ पर आपने एक इनवर्स आपने फाइंड कर लिया। अब ये जो x का वैल्यू y/2 आ रहा है, अगर हम इसको वापस रख दें f(x) की जगह, तो 2 और x का वैल्यू आपका क्या था y/2, तो फिर से आपका देखिए y आ गया कि नहीं, यानी f(x) जो है ये y के बराबर आ गया। दैट मीन्स देयर एग्जिस्ट एन इनवर्स, when there exists an inverse then this function is onto. Now this is the theoretical way by which we are writing in our examination and we get the marks. This is the representation of 1 1 and onto functions. I am coming to the exercise. चलिए अब शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, show that the function real to real defined by f = 1/x is 1 1 and onto. We have to solve this question. चलिए अब हम इसको शुरू कर रहे हैं। Exercise 1.2. Question number 1. Now we have to prove that there is a function f from real to real set. It is defined as f(x) = 1/x. Now for 1 1 function, how will we show? We take f(x) = let fy. Okay, I will take x and y. So in place of x we write 1/x, in place of y we write 1/y. Now when we cross multiply we get x = y. So यही हमने लेके चला था कि f(x) जो है y के बराबर है and we get x = y. So we can write f is 1 1 function. F is 1 1 function. Now we have to prove, we have to see whether it is onto or not. Now if y belongs to R, then there exists some x which is equal to 1/y which belongs to R, real number. So for example, let it be mathematically 2, it belongs to real number. And if we find 1/2, that is 0.5, and we see it is also again a real number, because real number contains both fractions and these numbers. So it is again a real number. So we can easily find the inverse. That is f(x) is equal to 1 over, that means we get the value of x 1 over y. So now we put its value over here. So 1 upon, in place of x we write 1/y. So we get again f(x) is equal to y. So we can write f is onto function. No, it is for the case of the real to real. इसी क्वेश्चन में आगे इसी को नेचुरल से पूछा गया है, ठीक है। तो चलिए अब उसको करते हैं हम। Now we have a function, for example let it be g, it defines from natural to real number. Now gx is equal to 1/x. Now if we take g of, let it be x1 which is equal to g of x2, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 1/x1 is equal to 1/x2. Don't do this. No. Now cross multiply. So x1 is equal to x2. जब हमने gx1 gx2 के बराबर ले लिया तो वो x1 is equal to x2 के बराबर हो गया. So now we can say that g is 1 1.
So this is the for 1 1. Now for onto. Now when we find onto, we get, for example, as it belongs to natural number. So if we take any natural number 2, it becomes 1 by 2, which is equal to 0.5, and 0.5 does not belong to any natural number. So gx we get is equal to 1 over 1.2, so which is not a natural number. So g is not onto over the natural number. Now I am shifting to the second question. Now in the second question, we have to check the injectivity and surjectivity. So as I told you earlier, injectivity means 1 1, and surjectivity it means onto. Clear? So we have to check for 1 1 and onto 1 by 1 for each of the following. So first is given, for the natural number to natural number condition, you must have to check the condition. Natural to natural number, fx is equal to x square. Now let's start question number 2, first part. Function is given as natural to natural number and fx is equal to x square. So if there are two numbers x and y, they belongs to the natural number, then fx is equal to fy, we take like this. So it becomes x square, and here it becomes y square. When we take the square root, it becomes x is equal to y. So we assume that fx is equal to fy, and we got x is equal to fy. So it is 1 1. So, or we can say that it is injective function. Now we have to check for surjective. For example, if 2 is a natural number, it belongs to natural number. But if we solve for fx is equal to x square, that means 2 is equal to x square. We get x is equal to under root 2, which is not a natural number. So we cannot find the inverse for that. So f is not surjective. So now the second part. In the second part, it is given, function is given from integer to integer, given by function is equal to x square. Now, for example, we have the function fx is equal to x square. Now we know that if we take an integer 1, so f of 1, it is 1 square, which is equal to 1. But if I take minus 1, because minus 1 is also integer, so that is minus 1 whole square, that is also 1. So now fx is equal to fy. Clear? It is 1 and 1. But x and y are not same. That means minus 1 and 1 are not same. So f is not injective. Injective means 1 1. We can write like this, f of 1, f of minus 1. Clear? Now for the surjective, if we have to check, for example, the same thing. For example, there is a number minus 2 which belongs to integer. Now if we find minus 2 is equal to x square, then value of x square is under root minus 2. And under root minus 2 is not an integer because it is an irrational number. So f is
not surjective. Now for the real number, we have to check in the third one. As I let's see question number 2, third part. Now condition is given to us for the function real number to real number fx is equal to x square. Now there are two real numbers, -1 and 1, which belongs to the real number. Now if we find f of -1 and f of 1, we get -1 whole square and here 1 whole square. We get 1 and 1. But we can see value of x1 is -1 and value of x2 is +1 and value of fx1 and value of fx2 which is equal to 1. But these values are same, but x1 is not equal to x2. So f is not injective. So for the injective, both fx1 is equal to fx2 and x1 is equal to x2. When this condition is satisfied, then only it is injective. Now similarly, if we find for the inverse for the onto function, that means if I take not 1, if we don't take 1 for that, if I take -2, which belongs to real number, so again -2 is equal to x square, and x square we get under root of -2, which is not a real number. So f is not surjective. I think concept is clear to you now. Now two more questions are there for the integers and natural number. Fourth one, f such that n belongs to n, given by the relation fx is equal to x cube now. Now for x cube, similarly we proceed. If there are two elements xy belongs to the natural number, then we take fx is equal to fy. That is x cube is equal to y cube. So again it is a natural number, x is equal to y. So we can say that f is injective. Now for the surjective. Now we have to take a natural number. Let it be 2, not -2. 2 belongs to natural number, but if we take 2 is equal to x cube, then value of x cube is cube root of 2, which is not a natural number. Because cube root of 2 is somewhat little bit irrational numbers. So we can say that f is not surjective. Our next question for the integers we have to check. F such that z belongs to z, fx is equal to x cube. So now we check for 1 that is injective. So fx is equal to fy, which is equal to x cube is equal to y cube. So we have x is equal to y. So we easily say that f is injective. Because if we take the cube root of any integers, it comes out to be integer. Now similarly, if we take 2 belongs to integer and we find the cube root of 2, then the value of x is cube root of 2, that is 2 to the power 1 by 3. It is ultimately a fraction. It does not belongs to the integer. So f is not surjective.
Now next question. Question number 3. What is the greatest integer function? You can see that it is the greatest integer function. Clear? Greatest integer function is denoted by like this. Clear? And for the greatest integer function, for example, if we have the values 1.2, if we have the value 1.9, everyone has the answer 1. Okay? So, we proceed. Function is given only fx greatest integer x, and we have to check for 1, 1 and on 2, and nothing else is given in the question. So we have to do now. This is the question number 3 of exercise 1.2. Now function is defined as real to real number fx is equal to greatest integer function x. Now we have to check for 1, 1 and on 2. This is very important function. When anything is written in this, it is known as greatest integer function. If you want recorded lectures, you can contact me on my WhatsApp number by sending just only message, not by calling. Now, solution. Now, function is defined as real to real number. Now, fx is given us as greatest integer function of x. Now, for example, if we take different values, that means if we take x is equal to 1.3, x is equal to 1.7, let it be fx1, this is x2. So if we find fx1, which is equal to greatest integer of 1.3, which is equal to 1. If I find the value of x2, that is the greatest integer of 1.7, which is equal to 1. Now we can see over here, fx1 is equal to fx2, but x1 is not equal to x2. So it is not an injective function. That is, we can say that it is not 1, 1. Injective means 1, 1. It is not 1, 1. Now we have to check for onto. We have to check for onto. Let us consider our example 0.7. Let it belongs to the real number. Now, if we find fx for any of the greatest integer function, we get integer. So, thus, we cannot, there exists no value of x such that we get fx is equal to 0.7, because as we write for 0.7, it becomes 1, it becomes 0, because decimals are ignored. So we can write that f is not onto. So from here we can see that not 1, 1 and not onto. So remember this point, greatest
integer functions are neither 1 1 nor 1 2. Now next question. Question number 4. It is for the modulus function and then second function. Okay. I'm taking the modulus function, and in the next part then I will make the second function. Okay. I'm taking the question number 4, and the from 5th I will take it in the next lecture. Show that the modulus function, that means modulus is written in this. We have to show it is neither 1 1 nor 1 2. Clear? So, solution. Function is given in real to real number. The value of fx is equal to mod of x. So we can write it as value of x is x if x is greater than equal to 0, and it's minus x if value of x is less than 0. Now if we find the value of f of minus 1, it becomes minus 1, which is equal to 1, and if we find the value of 1, then it is also 1. Now, so from here we see that f of minus 1 is equal to f of 1, but minus 1 is not equal to 1. That means from here we conclude that fx1 is equal to f of x2, but x1 is not equal to x2. So we conclude that it is not 1 1. Now I am going to check for onto. Now if we consider a case of minus 1 which belongs to R, then f of x, it is minus 1, which is 1. That is, mod of x is always a positive number, is always a positive number. So there doesn't exist any element which fx of x is equal to minus 1. There exists no element such like this. There is no element in the domain of the set for which the value of fx becomes minus 1, क्योंकि value of modulus of x is always a positive number, never a negative number. So f is not onto. So from here we also conclude that modulus functions are also neither 1 1 nor 1 2. Nor onto.